कोई भी Xampp सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, तो आप कैसे कर सकते हो? ठीक है। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या है हमारे पास? द फर्स्ट स्टेप इज दैट this is your Google. Okay, and here you can find XAMPP, Xampp, and download. If you have a Mac operating system, so you can use the this link. If you have a Windows operating system, so you can use the this link. Just like I have a Windows operating system, so I'm going to use this link. Okay, so आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है Xampp डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, यू कैन गेट दिस फर्स्ट लिंक। अपाचे कंपनी ने इसको डिजाइन किया है, करता धरता इज अपाचे कंपनीज हियर, so you can easy to download this software. So Xampp software you can download from here, from this link. The official website is apachefriends.org/downloads.html. Okay, this is the official link और इस official link को आप लोग use कर सकते हो। Then we have a Windows, we have a Linux and we have a Mac. तो आप इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मानो, दिस इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। ठीक है ना? अब आपको डाउनलोड करना है, सो यू कैन सी हियर वी हैव अ PHP, मोस्ट ऑफ द PHP यूजर्स आर यूजिंग दिस Xampp software, so you can just click here to download, and maybe we can get the link. Download start automatically, do not click. Yeah, so you can see it's downloading here. Okay, so just wait within a minute, then we go for the next step. Okay, just downloading. You can also start the process. You can easy to download this Xampp software. Okay, now you can see we have a installer.exe. This is my exe file. Just click here. This is your location, the download location. तो आप यहाँ पे जा सकते हो डाउनलोड लोकेशन पे और इसको चेक कर सकते हो। क्या करूँ, इसको रिफ्रेश करना हो पेज को, सो जस्ट लाइक क्लिक एंड रिफ्रेश। लाइक आपको कैसे करना है, लाइक दिस वन, या आप अपना फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लो और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एक डाउनलोड्स का ऑप्शन, उस पे जाके आप चेक करोगे, ये आपको Xampp विंडोज मिल जाए। डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ कि हाउ कैन यू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। सो द डबल क्लिक यू कैन डू हियर, सॉफ्टवेयर को जस्ट सिलेक्ट करना और डबल क्लिक कर देना है। ओके, आपको कुछ इस तरीके की विंडो आएगी यहाँ पर और यस बटन पे क्लिक कर देना है। देन यू कैन गेट दिस पॉपअप विंडो। Important because on activity user account use sees the system location Xampp is properly entered program file missing the permission, the deactive UAC, the micro configure and the steps. Okay, ठीक है, फिर आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। देन यू कैन स्टार्ट योर सेटअप, देन क्लिक टू द नेक्स्ट बटन। देन यू कैन सी वी हैव अ लॉट्स ऑफ links, just like for MySQL I can use here, FileZilla we can use here, the Mercury software we can use here, Tomcat you can use here, Perl software we can use here, PHP admin we can use here, Web uh, Eliza we can use here. Okay, so I do not need this one or this one and this. ओके, सो ये जो है ना, ये मरकरी और टॉमकेट और पर्ल, ये मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। भाई मुझे इसको यूज नहीं करना है, तो मैंने इनको यहाँ से अनचेक कर दिया और फिर नेक्स्ट बटन पे आप इसको क्लिक कर सकते हो। दिस इज द लोकेशन सी Xampp। अब सी लोकेशन, सी जो डायरेक्टरी है आपके पास, उसमें Xampp नाम का जो एक फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, वहां पे आप इसको स्टोर इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे काम करा सकते हो। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक हियर, गो टू द नेक्स्ट बटन, अगेन यू हैव टू क्लिक हियर। नाउ इट्स इंस्टॉलिंग योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, विद इन 5 मिनट ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो इट्स फिनिश नाउ। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी हैव अ दिस Xampp सॉफ्टवेयर। नाउ यू वांट टू चेक एक्चुअली दिस इज this software in your computer system or not. So how can we test here? So this is your search button. You have to click here and go to the here, the control panel, and here you can see uninstallation options,
and now you can see we have this Xampp software. Okay, so Xampp software is here. The first step you can check from here, and the second step directly you can write here Xampp. Okay, this is your search box. Here you can type the search. This is a search box. Just type here the Xampp, and now you can see we have a Xampp control panel. And now you want to start the control panel, so just click here. So open this पेज। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके की विंडो की स्क्रीन लाइक ऐसे कंट्रोल पैनल दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा जैम कंट्रोल पैनल। ठीक है, so XAMPP control panel if you have, so we can start the Apache server and SQL server here. So how can we start here? So this is a start buttons here. So you have to just first click here, and second again you have to click here, and now you can see saying that ki, do you want to use the public networks also? I am going to say yes कि भाई public networks भी access कर सकते हो आप। ठीक है, so my control panel is ready here. ओके, बता रहा है कि भाई योर कंट्रोल पैनल इज रेडी, नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क। तो इसने मुझे इंडिकेशन दे दिया है कि भाई सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करना शुरू कर सकते हो। गॉट इट। नाउ हाउ कैन वी स्टार्ट द वर्क हियर? सो यू कैन सी कि दिस इज माय एसक्यूएल कीवर्ड इज हियर, and in this row you can see we have a this admin button. So in this admin button you have to just click here, and automatically you can see we can get the new window, the new browser, and there's some Xampp सॉफ्टवेयर रनिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस का कुछ एक सर्वर होता है ना, वो इंटरनली चलने लगता है। सो ये कुछ ऐसा चलता है, इसमें लोकेशन आ जाती है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। सो वो उसको इंटरनली कनेक्ट करता है, ढूंढता है कि भाई आपने कहाँ पे सॉफ्टवेयर को रखा है, वेयर इज योर सॉफ्टवेयर, एंड इट्स इट्स फाइंडिंग दिस द सॉफ्टवेयर की एक्चुअली यू हैव अ सॉफ्टवेयर, देन वी कैन स्टार्ट द वर्क। ओके, सो ये कुछ इसका इंटरनली प्रोसेस होता है। गॉट इट? First steps clear. How can we install and how can we download? The two step is clear.